So hello guys, welcome to my channel. Today I am going to show you how to make a electric flag hosting. Let's make it. First component is using cardboard, other material using MDA board and PVC pipe sheet. Cutter, cutted a square piece 1. So already cutted MDA board square 1 piece. Second component is using flag 2 piece. This project is using only 1 piece flag, big या small in your choice. My choice is small flag, not using big flag. Flag set left to right. And third component is using one material PVC pipe. Size, measure this hand. Piece pipe fix MDA board of piece left या right and get 1 piece wire large and 1 piece gear motor. Gear motor is run 3 volt to 5 volt, overload 6 volt only. In your using this gear motor. अगर आपके पास ये गियर मोटर ना हो तो आप इसमें का गियर मोटर निकाल करके और यूज कर सकते हैं. ये जो गियर मोटर है 12 वोल्ट पे वर्क करता है. ये जो गियर मोटर है 5 वोल्ट पे वर्क करता है. ये गियर मोटर आपको कहाँ पे मिलेगा? इसी बल्ब में मिलेगा. ये बल्ब कहाँ मिलेगा? आपके घर में मिलेगा. अगर घर में ना मिले तो आप जा करके अपने मार्केट से यानी गार्बेज एरिया से जहां पे कूड़े का बाड़ा बिकता है वहां पे आप जाओ. ये आपको बल्ब 5 रुपए से 10 रुपए आपको मिल जाएगा. ये लाओगे इसमें एलईडी भी निकल जाएगा. और गियर मोटर कभी खराब नहीं होता है. 99% गारंटी हम देते हैं कि ये ठीक होता है यानी चालू कंडीशन में होता है. लेकिन आपको इसको चलाने के लिए 12 वोल्ट पावर सप्लाई होना चाहिए, बैटरी या एडाप्टर. वायर क्रॉस पीवीसी पाइप upper to lower. Wire connect gear motor positive and negative, black negative, red positive connected. Wiring completed, positive, negative. Gear motor fix PVC pipe and piece pipe fix cardboard. Gear motor terminal right to left. PVC pipe fix cardboard. Wire cutted PVC pipe small hole. Get flag measure gear motor shaft to MDA board and big pipe cutted using cardboard and pipe attach gear motor shaft. Easily to attach pipe to gear motor shaft. And some material using 1 piece charging module 4056 5 volt charging module, 1 piece lithium ion battery 3.7 volt, battery to motor, gear motor easily to run. All connection completed. Circuit diagram video screen to upper. Battery negative connected, charging module B negative already mentioned, charging module B negative, and second terminal is positive, battery positive, wire connected, charging module B positive already mentioned, charging module. You are using any types of charging module. Gear motor wire red positive, black negative. Negative is connected B negative या output negative already mentioned in your charging module pin. Second wire red, gear motor positive connected to B positive. All connection is completed using 1 piece switch, SPST switch, using 6 terminal switch. Motor run backward to forward easily. Gear motor positive wire red, cutted to mid and connected switch.
So guys, all connection all good completed and fix all material in cardboard. Charging module, lithium ion battery and switch. Motor working. And get one piece pen. Using heavy pen या cutted a small piece of pipe, fill sand या soil and flag last point ending. Flag last point, roll one round, roll one round. Get Feviki and fix pen to flag. So guys, this is my project is already completed. Look here. In your choice, कलर पीवीसी पाइप आप चाहे तो कलर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। आज है 14 अगस्त, कल 15 अगस्त है, टाइम नहीं है। अगर कलर करेंगे तो सूखने में सुबह हो जाएगा, तो वीडियो हम कब अपलोड करेंगे, इसलिए हम इस पे कलर नहीं कर रहे हैं। ठीक, और एक्सप्लेन करने का रहा था, हम अभी इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे थे, अभी हिंदी में आपको सारा कुछ बता देते हैं। ये है गियर मोटर, 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी है। ये स्विच है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप की दुकान पर मिल जाएगा। ये है चार्जिंग मॉड्यूल, 456 चार्जिंग मॉड्यूल, ये आपको इजीली कोई भी शॉप पे मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक का। ये फ्लैग है जो कि छोटा वाला है, ये साइड में आप देख सकते हैं बड़ा वाला। अब छोटा वाला यूज करने का पर्पज ये था कि कार्डबोर्ड हमारे पास इसी साइज का था, तो इसलिए हमने इसी का यूज किया। अगर आपके पास बड़ा हो तो आप बड़ा वाला फ्लैग ऐसा यूज कर सकते हो। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक इसमें थोड़ा सा आपको जो डाउट है वो क्लियर कर देना चाहते हैं। आप इसके जगह पे 6 टर्मिनल वाला स्विच लगाइएगा। मेरे को नहीं मिला, अगर आई होप मिल जाता है मेरे को मार्केट में स्विच वाला तो हम लगा देंगे इस पे, लेकिन अभी इसको टेस्टिंग करके आपको दिखाने वाले हैं। तो सब कुछ चिपका दिए हमने। अब क्या करना है कि बस इसको रोल करना है। रोल हम इस सिंगल स्विच लगाए हैं तो इसको हाथ से ही रोल कर देंगे, और अगर आप डबल स्विच लगाए हो तो ये खुद अपना रोल कर देगा। तो बस आपको इसमें क्या करना है कि फ्लावर लगाना है और इसका बेनिफिट उठाना है। सो लेट्स गेट टेस्टिंग। So guys, get one piece 5 volt adapter and connected charging module to testing battery charging or not. Battery charging, glow in 5 volt modular red LED. Disconnect charging. LED battery full charge 3.7 volt. Gets flower yellow, red in your choice and fill flag. All good, completed flower fill and only press switch and flag is hoisting. Hit the like button and subscribe channel and press bell icon. Bye bye guys.